Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ स्टूडियो में आज खबरों पर टिप्पणी करने के लिए आमंत्रित हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर और देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार एके भट्टाचार्य। एके भी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। आइए आरंभ करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी। Prime Minister Narendra Modi stresses on eliminating challenges to the agriculture sector for achieving goal of complete development. First G20 finance ministers and central bank governors meeting commences in Bengaluru. Prime Minister calls for bringing back stability and growth to the global economy. India's domestic coal production records more than 16% growth from April 2022 to January 2023. And the domestic markets suffer modest losses. Sensex closes below the 59,500 mark and Nifty settles below the 17,500 level. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संपूर्ण विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि क्षेत्र के विकास में बाधक तत्वों को दूर करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स की बेंगलुरु में आयोजित पहली बैठक में वैश्विक अर्थव्यवस्था में वृद्धि और स्थिरता को फिर से बहाल करने का आह्वान किया। भारत में अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 के बीच कोयले के उत्पादन में रिकॉर्ड 16% से अधिक की हुई वृद्धि और घरेलू शेयर बाजार मामूली घाटे के साथ हुए बंद। सेंसेक्स 59,500 और निफ्टी 17,500 के स्तर से नीचे आए। In our top story, Prime Minister Narendra Modi has said that the goal of complete development cannot be achieved until the challenges related to the agriculture sector are eliminated. The Prime Minister observed that private innovation and investment are keeping a distance from this sector, which leads to low participation of India's youth in the agriculture sector compared to the other sectors. Addressing the post-budget webinar on agriculture and cooperatives today, Mr. Modi highlighted that various announcements have been made in this year's budget to fill this lacuna. He urged the youth to work towards delivering the right advice at the right time while creating a bridge of information between the government and the farmer about their innovations and also assisting in policy making. The Prime Minister also touched upon using drones for crop approximation while providing real-time information about weather changes. Prime Minister Modi highlighted the importance given to the agricultural sector in the Union Budget 2023-24 as well as the budgets of the past 8 to 9 years. He informed that the agricultural budgets, which was less than 25,000 crore rupees in 2014, has been increased to more than 1,25,000 crores today. He added that every budget in recent years has been called a budget for Gaon, Garib and Kisan. On cooperative, the Prime Minister said that a new revolution is taking place in the cooperative sector of India. He informed that tax-related reliefs have been given to the cooperative sector in this year's budget, which will benefit the new cooperative societies engaged in manufacturing. He further added that TDS will not be levied on cash withdrawals up to 3 crore rupees by the cooperative societies. AKB, what's your take on these farmer-producer organizations, the cooperatives where farmers have the opportunity to be a member, contribute a fund, create it, establish it, and ensure that their produce has a ready buyer and they are able to get an income from it, while at the same time they can also sell it through resource persons who are engaged by these FPOs. Yeah, absolutely. The farmer-producer organizations are a little different from the cooperatives organizations which operate in the rural economy in particular, not just in agriculture but also, as you would know, that also in the financial sector. But the Prime Minister's focus is clearly on agriculture, and I'm particularly
impressed with his focus on the need to introduce innovation in agriculture, and he attributes the lack of innovation to withdrawal or lack of interest among the youth in taking part in agriculture. And if you want to, as a country, as an economy, if you want to take full advantage of the demographic dividend that we have, we need to have youth meaningful, productive employment for the youth. Now, what has happened over the last few years is not just the few years, actually quite a few decades, that while the share of agriculture in overall GDP has not grown at all, but the employees, the employment, the workers' dependence on the agriculture sector has remained same. It's almost around 40-44% of India's workforce still depend on Indian agriculture. So therefore, a large segment of India's working force population is actually denied of the benefits that otherwise accrue to the services sector or to the manufacturing sector. So I think this focus on agriculture and the focus of the budgets on agriculture is something that is central to reviving the growth prospects of the Indian economy. AKB प्रधानमंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण और नाजुक पहलू की ओर विश्व मंच पर वैश्विक नेताओं से कहा है कि संपूर्ण विकास के, वैश्विक विकास के लक्ष्य के लिए कृषि पर नए सिरे से सोचना होगा, नए सिरे से ध्यान देना होगा। भारतवर्ष के बारे में अक्सर कहा जाता है कि गांवों का देश है और हमारी अधिकांश आबादी गांवों में रहती है, लेकिन हमने कोरोना अवधि से लेकर अब तक देखा है कि भारतवर्ष अपने कृषि क्षेत्र के बूते अपनी इतनी बड़ी आबादी को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने में सक्षम है। बिना कृषि क्षेत्र के उत्कृष्ट प्रदर्शन के हम ऐसा नहीं कर सकते थे। क्या जो कुछ उन्होंने कहा है वैश्विक नेताओं से, उसका असर हम संपूर्ण सोच में फलित होता देख पाएंगे? देखिए, जो आपने कहा एकदम सही है। अगर कृषि की अगर ये जो उत्कृष्टता जो है कृषि क्षेत्र का, उसको अगर हम नजरअंदाज कर देते पिछले सालों में, तो मैं समझता हूं कि आज की तारीख में जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तरह जो निःशुल्क जो ग्रेन्स की जो वितरण जो हुआ था, वो करने में काफी दिक्कतें आती। बात यह है कि आज की तारीख में जो हमारी जो ग्रेन स्टॉक्स जो हैं, अभी भी हमारी बफर स्टॉक से थोड़ी ऊपर ही हैं, कम हो गई हैं, क्योंकि हमने सरकार ने फ्री ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन की थी। तो इसका मतलब यही है कि हमें कृषि की उत्पादकता बढ़ाने में कोई ढीलापन नहीं आना चाहिए। ये तो बात साफ है। पर मैं समझता हूं कि जो एक तो है प्रोडक्शन और एक है प्रोडक्टिविटी जी। और मुझे ये लगा कि ये निष्कर्ष जो है प्रधानमंत्री जी का, उसमें ये लगा कि वो प्रोडक्टिविटी के ऊपर जो इनोवेशन लेड होना चाहिए उसके ऊपर जोर दिया है। और उसके साथ उन्होंने डेमोग्राफिक जो एक एडवांटेज जो हमारे पास है, ये यूथफुल नेशन है, यंग नेशन है, उसका एक कोरिलेशन उन्होंने एस्टैब्लिश किया है। मैं ये समझता हूं ये जो पॉलिसी फोकस जो है, ये आज की तारीख में बहुत central hai. Briefly, how important is adapting and countering climate change important when it comes to combating inflation? Oh, absolutely. There is no doubt about it. As you would know that, the Prime Minister referred to the budget, the current budget, the latest budget, and you will remember that about 10 million farmers are being drafted into natural farming. There's a major focus on circular economy, which is essentially ensures that agriculture is conducted and operated in a manner that it does not contribute to environmental pollution. So therefore, this focus of creating a circular economy, ensuring that more farmers embrace natural farming is part of the overall grand scheme that the government is talking about. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बेंगलुरु में G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स की पहली बैठक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रारंभिक टिप्पणियों के साथ शुरू हुई। प्रधानमंत्री ने अपने रिकॉर्डेड संदेश में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और मौद्रिक प्रणाली के प्रमुखों से दुनिया में स्थिरता बहाल करने,
आत्मविश्वास बढ़ाने और वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में बढ़ोतरी के लिए मिलजुल कर प्रयास करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने वैश्विक नेताओं को भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और जीवंतता से प्रेरणा लेने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय उपभोक्ता और निर्माता अपने भविष्य को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बाधा, बढ़ती कीमतों, खाद्य और ऊर्जा चुनौतियों से प्रभावित दुनिया के लोग भारत की तरह सकारात्मक भावना का संचार करने में सक्षम होंगे। उन्होंने G20 मंच के प्रतिभागियों का विश्व के कमजोर नागरिकों पर ध्यान केंद्रित करने का भी आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था नेतृत्व के पास समावेशी एजेंडा होना विश्व के विश्वास को प्रभावित करेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत की G20 की अध्यक्षता का विषय भी एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के समावेशी विजन को बढ़ावा देता है। प्रधानमंत्री ने अन्य मुद्दों पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी और समस्याओं के समाधान का पता लगाने पर प्रधानमंत्री ने बल देते हुए कहा कि भारत का अपना अनुभव और अन्य पक्षों के लिए फायदेमंद हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने स्पर्श रहित, सुचारू, अधिक सुरक्षित, अधिक विश्वस्त और अधिक कुशल डिजिटल स्वरूप को विकसित किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में विकसित यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, शासन, बढ़ावा दिए गए वित्तीय समावेश और जीवन सुगमता में परिवर्तन आए हैं और ये परिवर्तन मौलिक हैं। एक भी हम आपका ध्यान G20 देशों के जो प्रमुख हैं, अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए प्रमुख लोग हैं, उनके इस सम्मेलन पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे। और प्रधानमंत्री ने डिजिटल भारत के जो बहुत सारे बदलाव आए हैं उनके प्रति वैश्विक नेताओं का ध्यान आकृष्ट किया है। इस सम्मेलन से हम क्या कुछ उम्मीद रख सकते हैं? देखिए, ये जो सम्मेलन जो है ये एक ऐसी खोज में है जिससे विश्व की जो वृद्धि दर जो है उसको किस तरह से सस्टेन किया जा सके वो खोजने में है। और उसके साथ साथ एक नई आर्किटेक्चर की जरूरत है, जिस आर्किटेक्चर के बदौलत विश्व की जो विकास और वृद्धि दर दोनों को ही बरकरार किया जाए। और प्रधानमंत्री का इशारा दो तरफ है, टेक्नोलॉजी की, जहां पे उन्होंने डिजिटल पेमेंट सिस्टम की बात की और जिसमें भारत ने एक नया कदम लिया है यूपीआई की तरह, जो सिंगापुर से भी जो रिसेंट जो एक कोलैबोरेशन हुआ है उसको भारत ने दिखाया कि वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कॉमन मैन को सुविधा प्रदान करने में सक्षम है। और दूसरी बात है, उन्होंने जो विश्व व्यवस्था जो है, जहां पे जो डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वर्ल्ड बैंक कहिए या IMF कहिए या ADB कहिए, इन सब संस्थाओं को किस तरह से सशक्तिकरण किया जाए इसके बारे में उन्होंने एक ऐलान किया है। और वो वहां पे किस तरह से भारतीय जो मॉडल जो है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल, जिस तरह से जो एक जिसमें आपने समावेशी एक दृष्टि कौन से है, अगर हम सोचें तो कैसे इसको आगे इस मुद्दे को बढ़ाया जाए। Very briefly, AKB, how concerned is our Honorable Prime Minister about the export market, because the G20 has finance ministers and central bank governors attending it, who in turn provide trade financing and facilitate the global supply chain network. What is the export market like right now, and should we be concerned? Yes, we should be concerned because exports are very critical to growth. And ensuring that India remains plugged into the global supply chains or the global value chains are very, very important. So the Prime Minister's reiteration on this point, that how the world can be better integrated in a global value chain, and in which India is also part of that, and that will immensely benefit India's export story. In more news, the IMF and the World Bank have projected India to be the fastest growing major economy in 2023.
According to the monthly economic review of the Ministry of Finance for January 2023, the measures announced in the Union Budget Financial Year 2024 are expected to sustain the growth momentum while aiding in addressing inflationary pressures. In the second half of the current year, headline inflation has been showing a downward trend on account of the measures taken by the government and the RBI. Domestic economic activity remains robust even as a global economic slowdown materializes, reflected in the performance of high-frequency indicators in December 2022 and January 2023. PMI manufacturing remained firmly in the expansionary zone in January 2023, driven by improvement in operating conditions. As of January 2023, PMI services remained in the expansionary zone for 18 consecutive months, supported by favorable demand conditions and increases in new work. Transport services activity until January 2023 period across rail, freight and air modes remained significantly above the corresponding levels of the previous 2 years. Indices of consumer spending such as domestic automobile sales, UPI transactions and credit disbursals indicate that overall demand conditions remain conducive to supporting economic activity. The resilience of private demand is also underscored in the performance of leading private consumer non-durables corporations, which posted healthy revenue growth in 2022. AKB, how is it that we have managed to ensure that demand levels are robust in the domestic economy, which is allowing for industry, manufacturing and services to thrive? I think what has been achieved in the last few years, and particularly in the current year, is that the growth engine has been kept revving by investments. If you look at the manner in which the government has kept increasing its investments, particularly in creating productive assets, particularly in the infrastructure sector, and that has kept going the demand side, kept helping the demand side. But inflation is a concern. Inflation will always remain a concern in a time when there are not just domestic factors at play, but also international factors. The Russia-Ukraine conflict is still very much around, and the crude oil prices are still elevated. They may have come down. So inflation is a function of not just domestic factors, but also international factors. So therefore, what we have seen is that trying to address the demand side of the economy through investments. Now, there could be a view that you can tackle the demand side through direct fiscal stimuli, but I don't think the government has followed that path. Government has followed a more trusted and tried methodology of increasing investment. Therefore, an infrastructure, when you build roads, then you also get people who come and build those roads and they get more money. So therefore, that helps you to create a kind of a virtuous cycle is created. So that is the model that the government of India has followed, and that's what the finance ministry note is highlighting. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। भारत के कोयला घरेलू उत्पादन में पिछले कुछ वर्षों में बढ़ोतरी देखी गई है। ये 2019-20 में 730 मिलियन टन से बढ़कर 2021-22 में 778 मिलियन टन पर पहुंच गया है, जिसके साथ इसका उत्पादन 6.47% बढ़ गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष में कोयला उत्पादन की नई प्रवृत्ति और उभरकर सामने आ रही है और देश में पिछले वर्षों की तुलना में अप्रैल 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक 698 मिलियन टन उत्पादन के साथ इसमें 16% की रिकॉर्ड बढ़त दर्ज हुई है। इस काल में कोल इंडिया लिमिटेड का उत्पादन 15% बढ़त के साथ 478 मिलियन टन से 550 मिलियन टन पर पहुंच गया। घरेलू कोयला उत्पादन में बढ़ोतरी से देश को ऊर्जा खपत के कारण लगातार बढ़ रहे कोयले की मांग की आपूर्ति करने के लिए बड़े स्तर पर आयात को घटाने में मदद मिली है। कोयला मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए उत्पादन लक्ष्य 1.31 बिलियन टन और इसी तरह 2030 के लिए 1.5 बिलियन टन निर्धारित किया है। मंत्रालय नए कोयला खान को शुरू करने और चालू खानों में उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न राज्य सरकार और केंद्र सरकार की एजेंसियों के साथ सक्रिय रूप से काम कर रही है। संक्षिप्त प्रतिक्रिया, हम सही दिशा में जा रहे हैं? एकदम सही दिशा में। मैं इसके साथ आपको ये आपको बताना चाहूंगा कि अगर मौसम विभाग की चेतावनी देखें, जो वेदर इस साल में हम ऐसी एक मौसम में गुजरने वाले हैं शायद
जहां पे जो नॉर्मल जो समर जो होगा बहुत ज्यादा होगा, हीट लेवल ज्यादा होगा, तो उसको देखते हुए जो डोमेस्टिक इकोनॉमी में जो समर टाइम में जो पावर की डिमांड जो बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसको देखते हुए ये जो कदम जो लिए गए हैं, जैसे कि कोयले की जो अवेलेबिलिटी में कोई समस्या न आए, जो कि पिछले 1-2 महीने में पिछले सालों में हमने देखी थी, वो उसके पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए मैं समझता हूं ये कदम बहुत महत्वपूर्ण है। आइए अब चलते हैं शेयर बाजार की ओर। पहले घरेलू शेयर बाजार। घरेलू शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला आज भी जारी रहा। सेंसेक्स 59,500 के स्तर से नीचे आ गया, जबकि निफ्टी 50 भी 17,500 के स्तर से फिसल गया। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 142 अंक नुकसान के साथ 59,464 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 45 अंक घाटे के साथ 17,466 दर्ज हुआ। विस्तृत बाजार की ओर चलें तो वहां भी गिरावट का रुख ही देखने को मिला है। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.17% की गिरावट हुई, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 0.15% नीचे आ गया। AKB, the DIIs were the net buyers in the market, providing much needed stability in a week where we saw the market decline, especially yesterday, but today declined by only 142 points. Plus the trading session the timing has been increased till 5 p.m. To accommodate interest rate derivatives. How do you see this? Do you see this as a pivotal moment in the stock market going down and recovering maybe next week? No, I don't see it as a pivotal moment. I see it as a part of a continuity, and where the stock markets are coming to terms with a host of I would call them adverse factors. The number one is, of course, there are continuing pressure on stocks of major infrastructure player, the Adanis. Number two is the corporate earnings forecasts are not looking very bright. They are lower than the consensus estimates of the expectations that many analysts had earlier indicated. So that is the second. And the third is both domestically and internationally, the inflation outlook is suddenly not looking very benign, in a sense that the domestic inflation number for January suddenly showed a rise, and we heard Reserve Bank of India's governors note of caution. So that has also impacted the stock market sentiment. And on the internationally, the U.S. Is clearly the U.S. Fed is not going to give up its rate increase momentum very easily, as inflation is not yet been brought under control, and even though growth is not that big a worry in the U.S. आइए चलें वैश्विक बाजार। एशियाई शेयर बाजार में आज मिला जुला रुख देखने को मिला है। निवेशकों की लिवाली से सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.5% लाभ में रहा। जापान के निक्केई 225 सूचकांक में 1.3% की वृद्धि हुई। उधर बिकवाली के दबाव में चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स और दक्षिण कोरिया का कोस्पी दोनों 0.6% घाटे के साथ बंद हुए। उधर हांगकांग के हैंगसेंग में बिकवाली के दबाव में 1.7% की गिरावट हुई। यूरोपीय शेयर बाजार की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां भी मिला जुला रुख दिख रहा था। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.3% ऊपर चल रहा था। फ्रांस के कैक 40 में 0.3% और जर्मनी के डेक्स में 0.4% की कमी चल रही थी और दोनों सूचकांक घाटे में चलते नजर आ रहे थे। Moving on to the US stock market, Wall Street entered positive territory yesterday with the S&P 500 snapping a 4-session losing streak as investors grapple with how interest rate policy might affect the US economy. The Dow Jones Industrial Average gained 0.3%, the S&P 500 rose 0.5%, and the Nasdaq Composite Index added 0.7%. AKB, to what extent do you see the treasury yield of US securities a great incentive for FIIs to divert investment away from emerging markets right into short-term treasury notes, where we are seeing yields for 1-year bonds above 5%,
6-month bonds, again more than 5%, and the other 2-year, 10-year bonds touching 4% or almost 5% respectively. Well, I don't see the yields declining in a hurry because what you are seeing is the US Fed in no mood to bring down the policy rate. They are still worried about inflation, and inflation has to be brought down to 2.5%. That's the target. And right now, the present prevailing inflation is nowhere near that. But what is upsetting this entire calculation is that the growth prospects in the US are still not that bad. By all available indications, the feared recession in the US is going to be averted. The job market is still very tight. So if the Fed continues to keep raising the interest rate to keep a check on inflation or bring it down, I would imagine that the debt market in the US will continue to be an attractive place, and a lot of emerging market economy money will like to flow back into that thing. So not a good news for the Indian stock markets. Let's have a look at the oil market now. Oil prices posted gains today as a prospect of lower exports from Russia offset rising inventories in the US and concerns over global economic activity. In intraday trade, Brent crude was trading at $83 per barrel, while WTI crude was at $76.05 per barrel. Yesterday, oil prices stabilized after Brent crude posted its biggest one-day loss for 7 weeks in the previous session. Briefly, what's the price that we are really paying for oil, and is that affordable even though we are procuring a great deal from Russia? And the US dollar index is firming up. It's now at 105 from 103. So how difficult is it for emerging markets to buy oil? It's for emerging markets is a different story, but the Indian story gives one tremendous sense of relief, I would say, because as you would know, that in the last few months, the share of Russian crude oil in our total basket of crude oil that we consume and import has gone up to 28%. Now that's a lot. Now it is now India's largest, mind my words, largest supplier of crude oil to India. Now that changes the equation. So therefore, while the Brent crude oil price is very, very important, but equally important is the price of Ural, which is at which prices, I understand they are being contracted at around $60 per barrel or so. Even after taking into account the cost of transportation and etc., I think the Indian government, the strategic and the geostrategic, the consultations have rather helped in India to alleviate the adverse impact of global international crude oil prices on the Indian economy. आइए अब चलें सर्राफा बाजार। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने और चांदी के भाव पर ध्यान दें तो थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही थी। समाचार तैयार किए जाने तक अप्रैल में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य आज 10 रुपए नुकसान के साथ 55,580 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर चल रहा था। वहीं मार्च में आपूर्ति की जाने वाली चांदी भी ताजा समाचार मिलने तक 500 रुपए घटकर 63,850 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अंतर्दिवसीय कारोबार में सोने का मूल्य बढ़कर $1,826.90 प्रति औंस पर था। चांदी थोड़ी कमजोर $21.20 प्रति औंस के स्तर पर थी। और यहीं पर श्रोताओं की ओर से एकेबी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। And before we close, a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi stresses on eliminating challenges to the agriculture sector for achieving goal of complete development. First G20 finance ministers and central bank governors meeting commences in Bengaluru. Prime Minister calls for bringing back stability and growth to the global economy. India's domestic coal production records more than 16% growth from April 2022 to January 2023. And domestic markets suffer modest losses. Sensex closes below the 59,500 mark. Nifty settles below 17,500 level. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.